Challenges to democracy. Challenges to democracy. First, what is challenge? We have to understand what challenge is. Challenge का मतलब क्या है, ये हमको first समझना होगा. Okay, challenge. Challenge is a difficulty or a problem. Challenge is a difficulty or a problem which can be overcome. Challenge एक difficulty है अर्थात problem है जिसको हम लोग overcome कर सकते हैं, जिसका solution हम लोग find out कर सकते हैं. That means if you have to define challenge, challenge is a difficulty or problem which can be overcome. Now, the main point to be discussed over here first here. Listen, a challenge is a difficulties that carries within it an opportunity. A challenge is a difficulties that carries within it an opportunity. Explain it. Question might come. So if we have to explain it, challenge एक difficulty है और ये अपने आप में ये एक अवसर भी लाते हैं. अगर इसको डिफाइन करना होगा तो लिसन. Yes, challenge is a difficulty, but when we face the challenge, we become self-confidence also, or it enhances our willpower. That means point number one, when we face the challenge, it makes us self-confident and it enhances our willpower. And if it enhances our willpower, we can tackle any problem in future very easily. Number 2 point, why challenge is called opportunity? Yes, challenge is opportunity. Point number 2, because whenever we face the challenge, we take ourselves to higher level. That means whenever we are facing a challenge and when we overcome it, definitely it gives us a new opportunity so that we can rise our level to a higher one. Arthat, point number 1, why challenge is called opportunity? Point number 1, challenge, it makes us self-confident and it enhances our willpower. Point number 2, whenever we face the challenge, it gives us opportunity or it takes us to a higher level. That means our standard, our thinking and everything, it goes up. That means our standard or level automatically goes up. So we say that challenge brings opportunity within it. Then now types of challenge. Types of challenge. Every country face some type of challenge. That means every country face some type of difficulty or the problems. Now, non-democratic countries, if we talk about non-democratic countries, whatever the challenge is faced by non-democratic countries, that is called the foundational challenge, or the challenges faced by non-democratic countries, that is called the foundational challenge. And the challenges faced by democratic countries, these are two types. Number 1, challenge of expansion, and number 2, challenge of deepening the democracy. That means non-democratic countries face only one type of challenge, that is foundational challenge. And if we talk about democratic countries can face two types of challenges, that is number 1, challenge of expansion, and number 2, challenge of deepening the democracy. Now, what includes foundational challenge? तो foundational challenge के अंतर्गत क्या क्या आता है? Foundational challenge, bringing down non-democratic regime. That means foundational challenge, it is faced by non-democratic country
And the first problem or the difficulty faced by non-democratic country, that is bringing down non-democratic regime. Point number 1. Point number 2, challenge faced by non-democratic country, okay, keeping military away from government. Keeping military away from government. And thought number 1, converting non-democratic regime into democratic one. अर्थात फाउंडेशनल चैलेंज का अंतर्गत यही 3 पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो दैट विल बी एनफ. नंबर 1, फाउंडेशनल चैलेंज का अंतर्गत आता है ब्रिंग डाउन नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम. नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम को ख़त्म करना. पॉइंट 2, कीपिंग मिलिट्री अवे फ्रॉम गवर्नमेंट. मिलिट्री को गवर्नमेंट का जो वर्किंग होंगे उसमें दखल देना नहीं देना. दैट मीन्स मिलिट्री को एकदम दूर रखना गवर्नेंस से. एंड थर्ड पॉइंट, कन्वर्टिंग नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम इनटू डेमोक्रेटिक वन. और थर्ड पॉइंट, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट करना. नाउ चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन. This is the challenge faced by democratic country. And challenge of expansion. Expansion means here you can understand that yes, democracy is already there, but democracy might not be up to the mark. There might be some community, there might be some social groups which might not be able to enjoy the democracy properly. So challenge of expansion, under this the point comes, that is ensuring greater power to local government. Local government को जितना ज़्यादा पावर देंगे उतना ही ज़्यादा पब्लिक का पास पावर रहेगा, कॉमन पीपल का पास पावर रहेगा. अर्थात हम लोग यहाँ कह सकते हैं ensuring greater power to local government, democratic country or the democracy can be extended more. Number 2, empowering women. महिला लोगों को और ज़्यादा क्षमता दे करके और मजबूत बना करके. एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स जो समाज में सप्रेस होंगे, अप्रेस होंगे, एक्सप्लॉइटेड होंगे, इन लोगों को भी ज़्यादा पावर दे करके हम डेमोक्रेसी को वीमेन और माइनॉरिटी ग्रुप्स जो अप्रेस से, सप्रेस से, एक्सप्लॉइटेड है, वहाँ तक हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं. एंड थर्ड पॉइंट, अप्लाइंग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी टू ऑल द रीजन्स एंड सोशल ग्रुप्स. अर्थात डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल्स सभी रीजन, क्षेत्र और सोशल ग्रुप, सभी समुदाय तक पहुँचा करके हम डेमोक्रेसी को एक्सटेंड कर सकते, अर्थात एक्सपेंस कर सकते. नाउ द सेकेंड challenge faced by a democratic country, that is the deepening of democracy. Deepening of democracy, by the word only you can understand that democracy is already there, but though democracy is there, there might be some people, they might not be happy to the government, they might not be happy to the working of the government. That means in any society it is not so that every individual is 100% satisfied or happy. So deepening of democracy, under it comes the point bring down control and influence of rich and powerful people. ऐसा होता होगा कोई भी सोसाइटी में डेमोक्रेसी सभी जगह, सभी कम्युनिटी, सभी रीजन तक पहुंचा होगा, फिर भी ऐसा होता होगा कि कहीं ज़्यादातर पावर हो या तो इन्फ्लुएंस हो वो रिच पीपल और पावरफुल पीपल का हाथ में होंगे. और वहाँ पर जो गरीब लोग जो होंगे वो लोग कुछ फील ऐसा करते होंगे कि डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी सिर्फ रिच लोगों के लिए है, पावरफुल लोगों के लिए है. तो वहाँ पर जो पावरफुल लोग और रिच लोगों का इन्फ्लुएंस में जो पावर है उसको भी हम लोग कम करके अगर गरीब लोगों को भी वहाँ पर कुछ अवसर दिया जाए तो ये डेमोक्रेसी को और मजबूत कर सकते हैं और डीपनिंग कर सकते हैं. एंड सेकेंड पॉइंट, मेक हैप्पी सेटिस्फाइड ईच इंडिविजुअल. ईच इंडिविजुअल एक सोसाइटी का और हैप्पी रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी 100% वहाँ पर सक्सेसफुल है.
ओके, थैंक यू।